screen visible to you? Yes, sir, visible. Okay, that's great. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, this is the course which we will be studying in the next semester, which is Robotics and Automation. This is an elective course, and I welcome you to the course of Robotics and Automation. So, in fact, we would be having two modules of this course. One would be dealing with the robotics. So, this will be our module 1. This will be our module 1, and this is automation, which is going to be our module 2. Please pardon me for my handwriting. मैं वैसे भी कागज पे भी I cannot write बहुत खूबसूरत मेरी लिखाई नहीं आती, तो ये स्लाइड के ऊपर तो I feel challenged. So please pardon me for this, but I'll try my best that whatever I write, it is legible and understandable for you. So this is the course which we are going to go through for the next semester, which will be dealing with the robotics and automation, and I have divided it into two modules. So this is the robotics module, in which these are the topics which we are going to cover, which includes today's lecture, which is introduction to the subject, and then we will be dealing with the special descriptions and transforms, then kinematics, that will be for forward kinematics, then we are going to go through inverse kinematics also, and then we are going to talk about Jacobians, which deals with the velocities and static forces which are applied onto the robot. So we would be dealing with mainly we would be dealing with the manipulators. So what are manipulators? We are going to come to know through in when we go through this lecture. So I would explain you what is manipulator. So we would be dealing with manipulators in this course. But as an overview, I will tell you that what type of robots they are available and how do they operate. So this is automation. So I need your input in this. So if you can please help me that this is I have included topic number 2, which is production system, automation principles and strategies. Have you studied this? No, sir. Okay, so we do not. No, sir. Sorry, so you haven't studied this in your manufacturing. Okay, okay, good enough. Then numerically controlled machines, in which we do CNC programming, G and M codes. This is serial number 3. No, sir. Okay, you have not studied G and M codes also. Then I suppose that you have not gone through this course, but still I would just ask you one by one. Then is the manufacturing operations, production rate and capacity. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस तो काफी सारे कवर किए हुए हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कवर किए हुए हैं. सो इसमें ये आपने कौन सी बुक कवर की थी, कौन सी बुक से पढ़ा था? सर इसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं. मसलन क्या क्या चीजें उसके अंदर? सर जो बेसिक वर्कशॉप की हैं, जैसे जिसके अंदर था वुड वर्किंग भी थी, कास्टिंग, शीट मेटल, इस तरीके से था. मैं आपको एक मिनट बुक से बता देता हूँ कौन सी बुक हमने पढ़ी थी. फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर ये उससे डिफरेंट होगा, बिकॉज हम थोड़े से वी आर गोइंग टू स्टडी सम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड फिर देन उनका रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, इनके आपस के रिलेशनशिप है. सो इफ इट इज अ रिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी I would say brief part of the course, manufacturing operations. So if it is a repetition, so there's no issue, we can go with this. Then we talk about production rate and production capacity. I'm not sure if you have studied this. No sir, ये नहीं पढ़ा हुआ. No, ये भी नहीं पढ़ा. Okay, then how about serial 7, which is storage system? It is called ASRS, Automated Storage and Retrieval System. ये भी मेरा ख्याल आपने नहीं पढ़ा होगा. ये भी नहीं पढ़ा. लास्ट वीक नहीं पढ़े हुए लास्ट.
लास्ट 3 भी नहीं पड़ेगा. सो इट मीन्स के जो मैंने एक बनाए हैं इसके कोर्स कंटेंट्स, सो आई होप के वी विल गो विद दीज कंटेंट्स, वी डू नॉट नीड टू चेंज दीज. सो probably we will go with this. So automation is also covered, so let's move forward and then we talk about some learning objectives. So what we expect at the end of the course that you people will achieve these 6 objectives in which we will be you will become expert in calculating the kinematics, manipulator kinematics. Then you will be able to do the inverse kinematics of a manipulator. Then you can calculate the velocities and static forces on the robot, which is again a manipulator, and design attributes. So and the first 3 deal with the robotics part. So these first 3 these will be dealing with the robotics part. And these last 3 they deal with the automation part. Okay, so the automation part include the design attributes of manufacturing with particular reference to automation, then create CNC program using G&M codes, and design an automated storage and retrieval system and material transport system. I would try to give you an exposure of the machines also, but I'm not sure if we get some time for this or not. But if we come in face-to-face mode of teaching, so I'll try. Okay, I'll take you to the machines, the CNC machines, where you can put your code and manufacture something. And similarly, I can take you to the robotics lab and show you a manipulator which you can program by yourself and then execute certain movements. So let's hope that we get some chance to come into face-to-face mode after 2 weeks. So then that will be a good addition of your knowledge and your maybe I might not be able to give you a chance of handling it practically by yourself, but still I will try that whatever I could do, I can give you an exposure of robots and the CNC machines, which include your CNC lathe, mill, and a laser cutter also. So I'll try to give you an exposure for this also. As far as our textbooks are concerned, so for robotics, we are going to follow a textbook which is named as Introduction to Robotics, Mechanics and Control, and this is the 3rd edition by John J. Craig. So this is a very famous book which is used as a textbook in the whole world. Maximum people use these. So we would be following this. I have uploaded an e-copy of this book on LMS portal. So I would request you to please download that book and go through that book also. And if you can find this book in the market, so please buy it for you. So this will be very helpful for you because reading from a hard copy, I feel it, I consider it easier, and then you can make notes on the book also with this. So whatever is convenient, I have given you the e-copy that is uploaded. So you to qualify for this course, you need to go through this book, you need to use this book also, and then these are the lecture notes which will be in the form of PowerPoint presentations and the recorded lectures. These will also be uploaded on the LMS. So you need to keep these notes with you, and if you while you are attending the class, I would request you to please keep a register with you so that you can note down certain things which are not part of the lecture. However, I'll try and to write down things on the slides also, but still there are so many things which we discuss, but we do not write them on the slides. So I would request you to keep a copy and a pen with you so that you can take down your notes. And similarly, when we come on to the robotics, so the
Textbook for robotics, it is automation production system, and SIM. SIM is actually computer integrated manufacturing. SIM means computer integrated manufacturing. Okay, so this is the fourth edition, which is written by McKelpie Groover. Again, a very famous book which is used worldwide. So I have uploaded the e-copy of this book also on the LMS portal, so you can download it from there. You can get a hard copy from the market also. इसका जो original version is quite expensive, but low priced edition you are going to get it around 800 to 1000 rupees. So if you get a chance to buy this book from the market, I would request you, because keeping books with you, making them your friends would always be beneficial. Similarly, the lecture notes in the form of PowerPoint presentations and PowerPoint recorded lectures would be available to you. And again, I have put this course code which is required to register, but now I have come to know that it is only for Syndicate A. So I would request my CMS squad to give me the other code, which I can share with you through your CR. This is my email ID. So if you have any queries, you can contact me through email, or I can reply you through email. This is my WhatsApp number. Please save this number with you, and you can communicate with me whenever you feel that you need some queries to be answered. So I am available. During the daytime, sometimes I'm busy in some kind of meeting, so I might not pick up your telephone, but I would request you to please send me an SMS or send me a WhatsApp with your name and your query, and I'll definitely get back to you. So my office is in AST headquarters, so I have office in headquarter ASG, and you can visit me in my office if you have some queries. If you want to have a reinforcement, then you can make a group of 2, 3, 4 people and tell me the topics you want to want some reinforcement, so we can arrange something according to the availability of the time. I can do that in the office also, or we can go into the class also. So I'm sorry, but I have not introduced myself to you. I do not know how many of you know me. Hassan Raza, I have been working with him, so quite close. So Hassan knows me well, but I'm not sure that how many of you know me. So just at this point of time, let me introduce myself also, which I should have done earlier. So my name is Nasir, and I'm from Department of Mechatronics Engineering. My basic degree is in mechanical engineering, and then I did my master's and PhD in mechatronics engineering. So I have links with both the departments, mechanical engineering department and mechatronics engineering department. And I'm from degree 11, the first degree which started in EME College cadets degree. So I'm from degree 11. So this is about all about me. So let's move forward. All right, this is the grading criteria as of now. Let me just put the date here. In fact, this is discussed with you on on 15th March 21. So in this in this grading criteria, this is how I have put down the grading criteria. We are going to have 6 quizzes, which will carry about 15% of the weightages. Then as of now, we will be having 2 session exams, but I'm not sure what happens next if it
if we go with the midterm, so we need to then probably redefine these percentages. So I'll share with you if we need to redefine, but just to give you an idea, as of now, we are going to go with this type of grading criteria, which include quizzes, sessionals, and final exams. I have not put project and any kind of assignment into this, but I will keep giving you some reading assignments, which I would expect you to go through, and you do not need to submit those assignments to me, but just for your reading purpose, just to reinforce your knowledge, whatever we have studied in the class. So again, I repeat that this is something which we discussed today, but this is if the situation changes, then we might have to readjust some percentages. But if we Allah Taala खैरियत रखे, जैसे हम सोच रहे हैं कि after 2 weeks we will be able to go into the face-to-face mode, and then we will have exams in the face-to-face mode. So this would be the grading criteria which we would follow. Any discussion, or if you think that we need to change this, so we are open for discussion, so you can give your input also. All right. सर बी वाले ए में रजिस्टर कर दे। नहीं समझ आई, दोबारा काइंडली। अच्छा, तो बी वाले जो है सिंडिकेट बी वाले, वो ए में कोर्स रजिस्टर कर दें रोबोटिक्स है, क्योंकि जी बिल्कुल, मैं दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड द क्वाड दैट प्लीज मेक ओनली वन क्लास फॉर दिस, सो दैट I can put things only on one portal and it is accessible to all. So I'll do that today, and I'll let the class senior Hassan know that what the syndicate B people should do to register on the LMS portal. So एक ही उसके ऊपर हम इंशाल्लाह will try के इसी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी, any other question? Okay sir, thank you. Okay, so let's move forward and talk about now our lecture number 1, which will be dealing with the introduction to robotics. So let me just first see that what will be the contents of our lecture 1. So we are going to talk about some robots, and by means everywhere and for anyone, I mean that we find actually we find robots all around us, and these provide help. These provide help to, not of. This provides help to everyone. So kaise, we will discuss it today. Then we are going to talk about some laws of robotics, that over a period of time some laws have been proposed. They are followed to some extent, but not in true spirit. So we are going to talk about those laws also. We are going to talk about the history of robotics, that how the robot was developed, and then evolution of robotics. So this evolution of robotics part, this will be covered in the next lecture, means in 1 hour lecture. And then there are some robot applications. We are going to talk about those also, and what robotics is all about. We are going to culminate with this this sentence, that what robotics is all about, in 1 hour lecture tomorrow. So today we will be restricting ourselves to history only. So let's move forward, and let's see how we can see that robots are everywhere. So just let me, I have put some. So if you see on the top left on your screen, so this is an underwater robot.
So this is operating underwater. It can be autonomous. It can be remotely controlled, and see it can go underwater and can maybe this is a robot which is carrying out the repair of an equipment which is underwater. And there can be many other applications with that, or a robot can go underwater and it can send you some pictures of from underwater, and then it can can provide you some videos which can be helpful for you. If I look at this picture, this video, this is the manipulator you can see, and see it is carrying out the welding. So this type of this type of robots are called manipulators, which are fixed at its base. So we will be dealing with these kinds of robots in this course. We are not going to go um, with the mobile robots or underwater robots. So it was just to give you an idea that there are mobile robots also which can operate underwater. So this is the manipulator which you can see, and it is carrying out Sir? welding. So G. सर मैंने कंफर्म करना था कि या तो मेरी स्लाइड स्टक है या मतलब सारों को ही इस तरह से शो हो रहा है. At the moment, I have a slide in which robots everywhere for everyone is written. Can you see that slide? Lecture number 1 introduction to robotics शो हो रहा है. मुझे शो हो रही है स्लाइड रोबोट्स वाली. आपको स्लाइड शो हो रही है? So I'm not sure कि फिर इसका मतलब कि आपका हेल्ड हुआ है, आपकी स्क्रीन हेल्ड हुई है. हसन लीव करके दोबारा ज्वाइन करो. So I would request you, जिनको सिर्फ lecture 1 शो हो रहा है, I would request you to please leave and then join again. So probably you will be able to see the slides. Alright, anybody else facing the same problem? Can you see the slide? और इसके ऊपर जो मैंने videos play की हैं, can you see those videos also? Okay. Silence. Yes, sir. Visible new Okay. slide. Okay. So silence would mean that whatever I'm saying is okay with you, unless you call upon me and say, no, sir, I am unable to see it. So the silence I would take silence as an affirmation that whatever I'm saying is being communicated and conveyed to you. Okay. So so this is the manipulator wala jo video ki thi baat jo this is the you can see that this is a robot manipulator which is fixed at the base. So this type of robots, they are called manipulators. If you look at this picture which is on the right side of your let me just take the laser pointer. So if you look at this picture, so this is a doctor which is carrying out a surgery with the help of this robot. So this is called Da Vinci robot, which is used for the surgery. So this is another application of robot that a doctor does not come in contact with the patient, but it can sit at a distance. So here you can see that they are sitting very close to each other, but this doctor can sit at a remote place, maybe in America, and carrying out operation here in Pakistan. And this is actually, this has happened in Sir Syed University, where they have a lab in which they are working on this project, and they are carrying out surgeries like this. So this is again something which is of interest to you. All right. So now coming back, and now this is again a project which is done by the mechatronics department, in which they have developed an assistive. These are called assistive robots, which actually help people for rehabilitation. So you must have seen this video a lot of time. So I'll just stop here. And this is the humanoid robot. This is called Asimo, which you can see at your screen now. So this is humanoid robot. Honda Japan has made this robot, and this is called humanoid. So a lot of applications and research is going on this. And these are the four-legged robot. Boston Dynamics is working
American robotics company which is working in this domain, and they have developed a lot of two-legged or four-legged robots. If you can just go on to the uh, internet and Google Boston Dynamics, so you can come across a lot of projects like these. So these are the robots which are used for that. There are many others. There are wheeled robots. You can see autonomous cars. You must have seen or talked about. You must have heard about the Google car also. So these are again different kinds of robots. You must have seen. You must have heard about the DARPA challenge also. Has anybody read about DARPA challenge? DARPA. जी कोई कमेंट करेगा इस पे? DARPA challenge. नहीं सर अभी तक तो नहीं सुना, गूगल कर Okay. लेते हैं। So, okay, if you have not heard about DARPA, please Google it today and see what is DARPA challenge. This is a challenge which is given to the university students, and they compete in this. And at the moment, self-driving cars is the subject. Self-driving cars. सो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो इस वक्त जो इनका डायरपा का चल रहा है वो इसके ऊपर कर रही है। इससे पहले ह्यूमनॉइड के ऊपर भी उन्होंने अपने चैलेंजेस किए थे, एंड द लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्राई, उसके अंदर डॉक्टर जन हू वो आए थे, एंड ही हैड एक्चुअली हिज टीम हैड वन डायरपा चैलेंज फॉर ह्यूमनॉइड रोबोट. सो देन ही मेड अ वेरी high class lab with the funding which was given to him by DARPA after winning the DARPA challenge. So please, I would request you to Google it and just get to know that what is happening in the robotics world these days. So let us now see that how people define a robot. So some people say that it's a hobby. So I'll just keep. So some people say that it's a hobby. Robotics is a hobby. You have a kit, you can make a robot, just like you people must have used a Lego. So Lego kits are available. There are so many other kits which are available with the robotics kit. So some people say that it's a hobby. Some people say that it's a science fiction. It's a science fiction. So there have been we have been in our early childhood, or in when we were young, we used to see movies, science fiction movies in which there were robots, and today after about let's see 30 years of time, we see that whatever we used to see in movies, these things are now practically made and being used by the humanity, by the human beings. So the science fictions, they get true after about maybe 30 years time. So whatever you people are watching these days as a science fiction, when you reach our age, you would see those things practically made and being implemented. So some people say that it's science fiction, and what we say as engineers, we say that it is scientific and it is an engineering discipline. So this is what we say as engineers, that it's an engineering discipline. And with this engineering discipline, we actually make robots which are used in the industrial technology. So as an engineer, we look at robots as something which gives us a technology which can be used in industry. So this is how we look at the robots now. And हम जिन robots की बात करेंगे वो actually इस कोर्स के दौरान, whatever हम इस कोर्स के दौरान जो हम बात करेंगे, सो ये हमारे इसी डोमेन की हम बात कर रहे होंगे. और जैसे मैंने आपको बताया था कि दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेटर्स.
मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, और चूंकि हम थ्रू आउट आवर कोर्स हम मैनिपुलेटर की बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर मैनिपुलेटर्स. ठीक है. अच्छा, समटाइम्स इट बिकम्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आल्सो. It is often misinterpreted in the media and everything. So some people advocate that robotics and use of robots is essential, and some people oppose it. What is the biggest opposition for robotics? G, anybody who can throw some light on this, that what is the biggest opposition against robots? सर लेबर खत्म हो जाएगी. सर ह्यूमन जॉब्स ले लेंगे. Yes, so ये बिल्कुल exactly you have hit the bull, that it makes people, jobless. सर बाकी दुनिया में So कब्जा भी this, कर सकते हैं. yes, ठीक है, वो fiction बिल्कुल, we can see कि आजकल fiction में हमें यही नजर आ रहा है कि जी it can, the robots can take over the world and they can rule the world. So maybe after 30 years of time pass, so maybe you see them ruling your world while you सर are बेहतर ही thinking. चलाएंगे. अच्छा, ये वैसे दिस इज अगेन बहुत एक बड़ी डिबेट है. अल्लाह ताला ने जो ये हमारा कंप्यूटर सर पे हमारे रखा हुआ है, इस जैसी चीज़ जो है ना वो इंसान नहीं बना सकता. बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. यू आर एडिंग इंटेलिजेंस टू द मशीन. You must have studied or read about or heard about machine learning and artificial intelligence. So a lot of work is going on Yes, sir. in this area, but still जो काम एक इंसानी दिमाग कर सकता है वो ज़रा प्रॉब्ली एक मशीन के लिए करना मुश्किल होगा. बट अगेन मशीन की लिमिटेशन जो फिजिकल लिमिटेशन है वो जो ह्यूमन की फिजिकल लिमिटेशंस हैं, दो दैट कैन बी ओवरकम बाय द मशीन. जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि अंडर वाटर एक रोबोट है जो जा रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो प्रॉबली किसी इंसान के लिए शायद उस डेप्थ में जाना पॉसिबल ना हो. या अभी आपने देखा ये मार्स का जो मिशन है, इससे पहले भी एक मार्स का मिशन है. सो अगर आप देखें जो मैं इसको जो लोग एडवोकेट करते हैं वो कहते हैं कि जी क्या है, जैसे मार्स का मिशन है, सो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो इनटू मार्स मिशन. क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं है कि वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं. सो दे हैव सेंट रोबोट्स एट मार्स, जो कि वहाँ से आपको इस वक्त वहाँ की साउंड्स भी और वहाँ की इमेजेस भी जो है वो भेज रहे हैं. वहाँ से आपको सैम्पल्स भी भेजेंगे वो, जिनको कि यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा. सो ये वो चीज़ें हैं जो कि जिसको कि लोग एडवोकेट करते हैं कि जी वी कैन गेट टू नो थिंग्स फॉर विच मे बी एक्सेस टू ऑफ द ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल. बट एट द सेम टाइम जो अपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने लिखा कि वो जॉबलेस भी हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा इसके ऊपर एक है. बट स्टिल whenever we are going to talk about quality, or whenever we are going to talk about production, high production rates, so things which are not possible through human effort, those can be done by the machines. So anyways, this remains a topic of discussion, and this will remain a topic of discussion. So you can think about those and you can make up your own ideas. There's no bar on this. And then if you see in the last line, I have written that there is no single definition which is going to satisfy a variety of perspective and interests. So everybody defines the robotics according to his own or her own way of thinking. So perspective और interest जो उसके मुताबिक जो है वो define कर लिए जाते हैं. So this is what is a robot, and if this is the definition जो कि एक और research में इन्होंने publish की, जो कि most of the people they agree to this. And what do they say? They say that it's a mechanical device. पहली चीज तो ये है कि it is a robot is a mechanical device. ठीक है, which is controlled by software. So number one, it's a mechanical device, and it is controlled with a software. And वो software को input कहाँ से आती है? Sensor से. So there are sensors which give input
to the software, and the software then controls that mechanical device. इसका और किस चीज को वो कंट्रोल करता है? वो एक एंड अफेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड देन कौन सी, और वो मोशंस और वो कंट्रोल कैसे हैं? दीज आर द प्रोग्राम्ड मोशंस, और ये प्रोग्राम मोशन आपके पास दे कम टू यू थ्रू a software control, and it works in a workspace. So her robot key, there is going to be a workspace. This is the fifth thing. And then what do they do in the workspace with all these 1 2 3 4 5? What do? They manipulate physical objects. So what does that mean? So is my video visible to you? Can you look at my video? So जी नो सर, मेरी वीडियो आपको नजर नहीं आ रही? देखिए वो जो आपके पास स्क्रीन आ रही होगी, एक तरफ तो आपके आ पास रही है सर। जी एक तरफ शेयर हो रहा होगा और एक तरफ मेरी आपको वीडियो नजर आ रही होगी उसके ऊपर। तो इफ यू लुक एट माय वीडियो, सो व्हाट डू आई, इफ आई से दैट this arm is a manipulator and I am fixed at my waist. So if my waist is fixed and I have my arm is a manipulator, so I am sitting in my chair. So this robot can do what? It can pick this thing up and place it somewhere. So this is manipulation of physical objects. So this is my robotic arm. I have programmed it so it has mechanical linkages, it has motors to move to this. Elbow can rotate, my shoulder can rotate, my wrist can rotate. So this is a manipulator, and this manipulator can manipulate physical objects according to some software controlled instructions. And what does it do? It senses what, that where is this pen place, so which I need to pick up from here and put it here. So the sensors, it means that either I need to have a camera or maybe the coordinates of this pen is given, so I can go, my manipulator can go to the to that particular frame of reference, into those coordinates, and pick this thing up and place it here. So in fact ये जो आगे जो चीज pick and place वाला gripper है, इसको मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है, this is called end effector. So ये जो end effector है, ये एक gripper भी हो सकता है. This can be a welding torch also, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि वो वेल्ड कर रहा था. देन इसके अंदर और इसके ऊपर बहुत सारी, कोई कैमरा हो सकता है एंड इफेक्टर विच कैन गिव यू सम फीडबैक. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो हम इनको डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं एज एन एंड इफेक्टर. बट सिंस हम मैनिपुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो मैनिपुलेटर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a robot which is a manipulator which is fixed at one place, and it in a certain workspace it manipulates physical objects. जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. सर हम सेंसर को कितना डेप्थ में पढ़ेंगे? सॉरी दोबारा जरा काइंडली. सर हम सेंसर्स को कितना डेप्थ में पढ़ेंगे? नहीं, सेंसर्स को प्रॉब्लली हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास ना इस वक्त बहुत शॉर्ट टाइम है. वी हैव ओनली 8 वीक्स. तो हम सिर्फ जो काइनेमैटिक्स है ना और वेलोसिटीज के कंट्रोल, इन्हीं को इनफैक्ट हमें इतना टाइम हमें देना पड़ेगा कि हम ये सेंसर्स को प्रॉब्लली पढ़ नहीं पाएंगे. तो सेंसर्स के ऊपर क्या देखें, सेंसर्स में क्या क्या चीजें हैं. कैमरा कैन बी अ सेंसर, ठीक है. देन आपका ये जो हैप्टिक सेंसर होते हैं जो आपको एक टच की फील देते हैं, वो आपको आप इसमें वो आप पढ़ सकते हैं एट योर ओन. कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं, बिकॉज एक सेंसर है उससे आपको एक फीडबैक आनी है और उस फीडबैक को आपने यूज़ करना है टू कंट्रोल दिस मैकेनिकल डिवाइस थ्रू काइनेमैटिक्स. अभी जब मैं काइनेमैटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि हर चीज़ इज कंट्रोल थ्रू काइनेमैटिक्स. और काइनेमैटिक्स क्या है? दीज आर मैथमेटिकल इक्वेशंस, these are some matrices.
So you put angles and lengths of the links into those matrices, and those become equations, and then according to that angles आप rotate करते हैं अपनी motors को, and then you reach a certain place in your workspace. So ये बड़ा interesting आपको ये लगेगा कि जिस वक्त आपको ये नजर आएगा कि फिर आप इसकी सिमुलेशंस कर सकते हैं. मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इफ वी गेट टाइम तो मैं आपको थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर की एक्सपोजर भी ज़रूर करवाऊंगा, जो कि हमें अपने रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं, उसको टीच करते हैं पॉइंट्स का. तो डेफिनेटली इफ वी गेट टाइम इन FTF मोड, so I am sure this will be an enjoyable course, but I will try my level best. If we remain in DL mode, I'll put in my best to give you the flavor of robotics, जिसमें कि ये सारे आपको kinematics और इनकी applications through software जो है वो भी मैं दिखा सकूं और करवा भी सकूं. So I'll put in my best for this. जी, और कोई सवाल इसके ऊपर अभी तक? Alright, जी, if there is no more question, so इस वाली definition जो हमने ऊपर वाली बात की थी, so this definition goes with the manipulation system, but then a generic definition came up. क्या है? The generic definition say robotics is the intelligent connection of perception of action. I repeat, robotics is the intelligent connection of perception of action. What is a perception of action? A perception of action is something which I think. I think of an action. Let's see. I think of an action that I do not want to go to my home for lunch, but I can program my car to go autonomously to my home and bring my lunch back. So this is my perception of action was what? My perception was that I do not want to go out of my office and go home and have lunch. This was the perception. What action I can do? I can ask somebody, yeah, go and bring lunch for me. So some human being will go and bring my lunch. So this can be one action. So what can be an intelligent connection in this? An intelligent connection in the terms of robotics can be that I develop an autonomous car or an autonomous vehicle or some autonomous drone which can fly. Drone can fly from here, go to my home and pick up my lunch and bring it back here. Or maybe I can have a self-driving car which can go and bring my lunch. So this is what is the intelligent connection about the perception of action. So whatever you think. जी sorry. तो मैंने कहा सर लेजी होने का मौका. लेजी होने का मौका भी है, but at the same time आप क्या कर रहे हैं कि you are giving your time to something else. So you are saving that traveling. So you are saving that traveling time, जिसके अंदर maybe if you are carrying out some research or some experiment, so you can sit back in your office and you can do that job, and somebody else is taking care of your things. Maybe that can be your orderly also. But हम कहते हैं कि humans को अगर थोड़ा सा हम side पे रखें, and we talk about robotics, so the perception of action through an intelligent connection can be termed as robotics. So ये एक definition जो है वो एक generic definition manipulator से बाहर निकल के ये भी लोगों ने की. So we move forward and we talk about now some timelines जो कि history की हम बात करेंगे. तो 1495 actually the first thing which was termed as robot was 1495 when Leonardo da Vinci he designed a mechanical device which looked like an armored knight. The mechanism inside Leonardo's robot was designed to make the knight move if there were a real human inside. So अगर आप ये इस वक्त आप ये इसकी देखें, let me just take the laser pointer. So अगर आप इस वक्त ये देखें तो आपको देखें कि ये इसकी एक वो नाइट की वो बनी हुई है और इसके पीछे देखें मैकेनिज्म ये इसके आर्म्स को, एंड देखें क्या चीजें हैं इसके अंदर. पुलिस वायर्स, कुछ चीज आप खींचते हैं, किसी चीज को खींचते हैं तो दूसरी चीज मूव करना शुरू कर देती है, जॉइंट्स. So this was the first thing which was made which was termed as
a robot. So इसको Leonardo's robot कहा गया. Then फिर उसके बाद बहुत इसके ऊपर जो है वो तेजी के साथ काम नहीं हुआ. Then in 1920 एक चेकोस्लोवाकियन प्लेराइट है कार्ल कैपेक, उसने एक वर्ड रिबोट इंट्रोड्यूस कराया, RUR, जो कि which was Rossum's universal robot. और ये इसका प्ले था एक्चुअली, दिस वाज हिज प्ले, जिसके अंदर उसने ये एक दिस प्ले था जिसका नाम था Rossum's universal robot. So this word came from the Czech word robota, which means tedious labor. So he termed robot as something which can work for you for a very very long time और वो थकेगा नहीं. So this was 1920 when this term again coined up. And then Isaac Asimov he published a runaround, which was actually his research, in which he defined 3 laws of robotics. So सबसे पहले Isaac ने जो है वो 3 laws of robotics जो है वो दिए. We will talk about those 3 laws also अगले 2-3 slides के बाद वो भी आपके सामने आ जाएंगी. So Isaac Asimov was the one who gave 3 laws of robotics. क्योंकि robotics के ऊपर लोगों ने जब काम करना शुरू किया, so उसमें फिर वही जो fears थे, जैसे आपने कहा कि जी they might take over, the robots might take over the world, तो उसके ऊपर फिर कुछ laws बने. We will discuss those also. Just to give you an idea that how सर यही है क्या हार्म नहीं करना किसी ह्यूमन को? जी बिल्कुल, वो भी we will go to that, वो भी आपको मैं I'll show you. ठीक है. Then in 1951 फ्रांस में रेमंड ने एक डिजाइन किया टेली ऑपरेटेड आर्टिकुलेटेड आर्म एटॉमिक एनर्जी के लिए. सो एक्चुअली एटॉमिक एनर्जी उनका जो कमीशन था उसके अंदर जो हैजर्डस मटेरियल्स की हैंडलिंग थी, फॉर हैंडलिंग ऑफ दोज मटेरियल्स रेमंड made a teleoperated articulated arm which used to pick things up from one place to another, and again it was a manipulator, and it was not autonomous, it was not programmable, it was teleoperated through a remote. So ये एक माइलस्टोन जब 1951 में फ्रांस में हुआ. Then 1954 ही में जॉर्ज ने फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोबोट जो है वो उसने फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोबोट की टर्म को कॉइन किया with the name Universal Automation, and then he made his company with the name Unimation 1954. So इसने in fact प्रोग्रामेबल रोबोट जो है इसकी टर्म को कॉइन किया कि टेलीऑपरेटेड के अलावा यू कैन प्रोग्राम आल्सो, कि जी आप उसको एक प्रोग्राम दे दें एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग एट इज. सो आप उसको रोबोट को इसने ऐसे डिफाइन किया. फिर देन 1962 में जनरल मोटर्स ने यूनिमेशन का बना हुआ फर्स्ट रोबोट अपना लिया और परचेज किया, एंड दे यूज्ड इट ऑन देयर प्रोडक्शन लाइन. जनरल मोटर्स, यू नो, दे आर वेरी big name which in the motor manufacturing, in the vehicle manufacturing, और इसको उन्होंने फिर परचेज किया और इसको ऊपर अपनी लाइन के ऊपर किया. इसको लाइन प्रोडक्शन लाइन पे दे स्टार्टेड वर्किंग with the robot on their production line. This is the something which I would like to draw your attention. In 1965 ये homogeneous transforms, रोबोट की काइनेमैटिक्स अब यहाँ पे आ गई. ये जो मैंने आपसे जो हमने पढ़नी है इस कोर्स के दौरान, सो ये रोबोट की काइनेमैटिक्स है, ये होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म्स हैं. ये क्या करेंगे? ये हमें बताएंगे कि हाउ द एंड इफेक्टर, हाउ the hand of a robot, how the tool which is at the end of the robot can reach a certain place and then work on something. So ये वो kinematics हैं जो कि इंट्रोड्यूस की गई 1964 में, और ये जो है वो डायनामिट एंड हैटनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये किया, और इन्होंने इसको हम DH टेबल कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे. We will study DH टेबल. सो DH टेबल जो है वो किसी भी एक रोबोट का बनाया जाता है, देन उससे डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स बनाई जाती हैं और उनसे इक्वेशंस बनती हैं, एंड देन एक्चुअली यू कैन सी कि यार मैं कैसे मोटर को कितना रोटेट करूंगा तो मेरा रोबोट जो है वो कहाँ पहुंचेगा. वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी dive deep down into this kinematics. I am sure you will love it. So this is 1965 when this thing came up. In 1970 अब ये लोगों ने उन पैरामीटर्स को जो डायनामिट और हैटनबर्ग ने दिए थे
उनके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, एंड देन दिस वाज द arm made by Professor Victor, which is known as Stanford now. So if you look at this arm, तो आपको देखेंगे you have a motor here. You can see a motor here. And what does this motor do? That it extends this arm. It extends or then retracts. So this is, and this is fixed. This is fixed. So ये manipulator है. Since it is fixed, so it's a manipulator. Then it can, this is a joint. This is not a rotational joint. This is actually a joint which can translate. So this is a translational joint. With the help of motor, it can translate. And then this is the wrist. आपको देखें, ये आपको wrist नजर आ रही है. So wrist actually has 3 degree of freedoms. मैं अभी इसको degree of freedoms के बारे में आपसे बात करूँगा. So wrist जो है उसके अंदर 3 degrees of freedom होती है. अगर आप, if you look at my hand, let's see. अगर मैं अपनी मेरी ये wrist को देखें, can you see my wrist? जी, is it visible? मेरी जो वीडियो आपको आ रही है उसके अंदर आप can you see my? Okay. So आप देखिए ये जो मेरी wrist है, ये कितने ऐसे घूम रही है, ठीक है? So actually मेरी wrist के अंदर एक spherical joint लगा हुआ है. Let me just write it down here कि wrist has a spherical joint. और spherical joint क्या होता है? आपने ये गाड़ियों में देखे होंगे constant velocity joints होते हैं, CV joints होते हैं, जिनको उर्फे आम में गोडा भी कहा जाता है. So वो क्या होता है कि आपके पास इस तरह से एक ये कप होता है, ऐसे एक शाफ्ट, और इसके ऊपर आपका इस तरह से ये दूसरी शाफ्ट जो है ऐसे ऐसे, ठीक है? और ये आपस में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर आप देखें गैप छोड़ दिया है जस्ट टू शो यू, बट देयर इज नो गैप. दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ये ड्राइव भी करते हैं, और ये स्फेरिकल जॉइंट कहलाता है. जैसा कि आपको ये मेरी रिस्ट में इस वक्त, इफ यू लुक एट माय वीडियो, सो यू कैन सी दैट दिस रिस्ट कैन move in a as if a spherical joint. So what do we do in a robot when we make a wrist? So we, to achieve a spherical joint motion, we divide this spherical joint into 3 rotational joint. 3 rotational joints. So with the help of 3 rotational joints, we make 1 spherical joint. So we can achieve the motion of a spherical joint with the help of 3 rotational joints. हम इसको बिल्कुल डिटेल में इसके ऊपर भी बात करेंगे. इस वक्त आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि मेरी जो रिस्ट है उसमें जो स्फेरिकल जॉइंट है उसको एक्चुअली मैं 3 रेवोल्यूशनरी जॉइंट या 3 रेवोल्यूट जॉइंट के साथ, रोटेशनल जॉइंट के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ. सो वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है जी. सो ये अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको नाउ आई एम टेकिंग यू टूवर्ड्स सम टेक्निकल टर्म्स ऑल्सो, जिससे कि थोड़ा सा आपको और आइडिया बेहतर होता जाएगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट Puma robot. This is actually programmable universal machine for assembly. So now this is the Puma robot which is used for assembly, and it is used in many labs for research. So अब आप देखिए इसको बड़े यहाँ से आपको एक मैनिपुलेटर के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि नंबर 1, what is this? This is your base which is stationary, but it can rotate. See, ये देखें आपको ये जो नजर आ रहा है, this can rotate. So इसका मतलब है कि ये अपनी बेस के ऊपर रोटेट कर सकता है with the help of this motor. With the help of this motor. ये जो आपको नजर आ रही है ये मोटर लगी हुई है. So this can rotate with the help of this motor. और ये जो आपको रोटेशन है ये नजर आ रही है. ये कुछ थोड़े से हम इसके ऊपर फिर एक्सिस की बात करेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिफाइन होते हैं. अभी मैं आपको भी उसके अंदर नहीं लेके जा रहा. सो दिस इज कॉल्ड वेस्ट. ओके, अब आपने ना थोड़ा सा लिंक करना है इस पर्टिकुलर मैनिपुलेटर को अपनी आर्म के साथ. सो आपकी वेस्ट है जो कि फिक्स्ड है. सो यू आर स्टैंडिंग एट सम प्लेस
like I'm sitting in the chair. So I'm not moving, but I can rotate myself. Rotate, how can I rotate? If you look at me like this, so I can rotate towards my right, I can rotate towards my left. So जितना मैं rotate कर सकता हूँ उतनी मेरी वर्क स्पेस बढ़ जाएगी. Like इस वक्त अगर मैं बैठा हूँ तो मैं अपने पीछे जो मेरे पास वर्क स्पेस है उसको मैं अप्रोच नहीं कर सकता. So you see, but if I am able to rotate myself into 360 degrees or 180 degrees, so then I can face towards back, इस कैमरा से अवे फेस कर सकता हूं और मैं पीछे जो मेरी वर्क स्पेस है मैं उसके अंदर भी अपने हाथ को यूज कर सकता हूं. सो ये जो रोटेशन है ऑफ द बेस, ये आपको एक वर्क स्पेस जो है वो बताती है कि मैं कहां पे पहुंच सकता हूं. सो दिस इज वन जॉइंट जो कि मैंने आपके साथ आपको दिखाया. देन ये सेकंड देखिए. सो वी हैव अ मोटर हियर, इस जगह पे वी हैव अ मोटर which can rotate this arm. ये वाला जो आर्म है इस आर्म को रोटेट कर सकता है एंड दिस इज कॉल्ड शोल्डर. सो अब आप करें वेस्ट से शोल्डर पे आ जाए. सो अब ये आपका शोल्डर आ गया. तो इस शोल्डर में आप एंड देन अच्छा एक्चुअली तो हमारे शोल्डर में स्फेरिकल जॉइंट है, बट यहां जब हम रोबोट मैनिपुलेटर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ रेवोल्यूट जॉइंट, सिर्फ एक रोटेशनल जॉइंट की बात करते हैं. तो आप यूं समझ लें कि आई कैन गो लाइक दिस, आई कैन कम डाउन. अब आप लोगों को मेरी वीडियो नजर आ रही है ना? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैं क्या मूवमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं. ओके, सो दिस इज माय शोल्डर. सो एक्चुअली तो मेरे शोल्डर में रेवोल्यूट जॉइंट है, आप देखें आई कैन मूव इट लाइक दिस. लेकिन रोबोट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूं कि यार ये सिर्फ इट कैन मूव लाइक दिस ऑन दिस. So I can move like this on my waist, like this. I can move my shoulder up and down like this. So ये एक rotation यहाँ आ गई. So this is called shoulder. And the next is my elbow. ये आपको elbow नजर आ रही है मेरी. So अगर इसको मैं यहाँ पे देखूं, so we have a motor here. इस जगह पे we have another motor जो कि मेरे elbow का joint है और ये मेरा एल्बो जो है वो रोटेट हो सकता है. सो नाउ मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने आप को रोबोट समझना शुरू कर दें. आपको ये चीजें उस वक्त मैं समझूंगा कि आप यू हैव गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ रोबोटिक्स व्हेन यू आर सिटिंग एट योर होम and you start moving your wrist like this, then move like this, and your parents start asking you, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? Okay? यस सर. यस सर. ओके, सो इसका मतलब ये होगा जब आपके पेरेंट्स आपको ये पूछना शुरू कर दें कि यार ये तुम ये क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि नाउ यू हैव गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ रोबोटिक्स. सो अभी ये हाँ जी, वो पहले ही कहते हैं. यस सर. ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है. अगर आप पहले से ही इस में प्लंज कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट माय एम इज that after the or during this course you should start behaving like robots while you are sitting at home and people should start asking you कि यार ये क्या हो रहा है. So this is the first lesson which I'm giving you to start thinking about your arm as a robot. So then अब मैं next की तरफ आ रहा हूँ, elbow. So this is my waist, this is my shoulder, and now this is my elbow. ठीक है? So we have a motor in the elbow. So ये एल्बो का जॉइंट है, ये भी आपको नजर आ रहा है. एंड अब नेक्स्ट जो मैं आने लगा हूं दैट इज रिस्ट, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं. सो दिस इज रिस्ट. ठीक है, हाँ ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए रिस्ट है. और रिस्ट के अंदर आप देखें 1, 2 and 3 मोटर्स. ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं ना, ये जो सर्कल्स बने हुए, ये अपना एरोज बने हुए जो रोटेशनल दिखा रहे हैं आपको, रोटेशनल मोशन 1, 2 and 3. सो ये जो रिस्ट के जॉइंट्स हैं ना 3, ये इनफैक्ट आपको जो हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी आपको एक स्फेरिकल मूवमेंट देते हैं. सो नाउ आई हैव टर्न्ड यू इनटू अ रोबोट. सिट इन द चेयर, मूव योर वेस्ट लाइक दिस, देन मूव योर शोल्डर लाइक दिस, देन मूव योर एल्बो लाइक दिस, एंड नाउ कम टू द रिस्ट. अब देखिए रिस्ट को. रिस्ट में आपकी मूवमेंट क्या है?
रिस्ट में नंबर 1, अगर आप इस जहां पे मैंने 1 लिखा हुआ है, सो 1 में जब आप अपने आप को रोटेट करते हैं तो आपकी रोटेशन वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये मूवमेंट है, देख रहे हैं आप, ये मूवमेंट। ओके, देन इसके अंदर दूसरी रोटेशन क्या है, मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूंगा। पहली मूवमेंट मैंने आपको ये दिखाई, दूसरा ये मूवमेंट है, और अगर मैं जरा थोड़ा सा आपको टर्न करके दिखा दूं तो ये एक्चुअली ये मूवमेंट है। आई गो बैक। सो जो नंबर 1 मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, ये मूवमेंट है, मोटर ये मूव करती है। नंबर 2 में मोटर ये मूव करती है, और अगर मैं इसको आपको यूं करके दिखाऊं तो ये मोटर ऐसे मूव कर रही है। आई गो बैक, एंड द थर्ड इज दिस रोटेशन, ये वाली थर्ड जो है वो ये रोटेशन है। तो ये जो 3 मोटर्स लगी हुई हैं मेरी रिस्ट के अंदर, दिस गिव यू अ मूवमेंट ऑफ अ स्फेरिकल जॉइंट जो कि ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ ना आई हो, आई कैन रिपीट ऑल ऑफ इट अगेन। समझ आ गया सर? जी ठीक है, समझ आ कोई गई। स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, काइंडली मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बताएं, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आपकी मैं परसेप्शन में डालना चाह रहा हूं, दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट जॉइंट्स। सर ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। जी दोबारा बताइएगा काइंडली। सर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 6 होंगे फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने अभी सिर्फ जवाब नहीं दिया था। ठीक है, आप यू हैव हिट द बुल। जी, और किसी को ना समझ आई हो, मैं भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ आऊंगा दोबारा। जी बताइए, और किसी का कोई सवाल जो ये कहे कि यार ये जितनी बात मैंने अभी तक की है इन मोटर्स के बारे में, इन जॉइंट्स के बारे में, उसको नहीं समझ आई कि मैं ये क्या, आई एम टॉकिंग ग्रीक। Okay, so if there is no point from your side, so I take it for granted that you people have understood what all I wanted to communicate to you. Okay, जी, now we are going to talk about the degree of freedom, जो यहाँ एक अभी आपने बात की थी. So how do you define degree of freedom? जी, सर how? जो इंडिपेंडेंट मोशंस रिक्वायर होती हैं हमें किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। Very good, शाबाश. So degree of freedom is the independent motion. बिल्कुल ठीक है, मैं इसको NDEP लिख रहा हूँ, independent motion. So अब आप देखें, अब just look at me, थोड़ा सा जरा I make a little distance. अब आप देखें, so if this is manipulator and ये एक इस पोजीशन में है और मैं ये मूव कर रहा हूँ अपनी रिस्ट को, जो पहला जॉइंट है, तो there is no other motion taking place in this manipulator, इस पूरे manipulator में. So this is an independent motion. ठीक है, so this is 1 degree of freedom. Then नंबर 2 आ जाए. अब मैंने अपनी वेस्ट को लॉक कर दिया और अब मैंने अपने शोल्डर की मूवमेंट आपके सामने दिखा दी, ऊपर नीचे. सो ये मोशन, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मोशन. देन अब इधर आ जाए, ये मेरी जो रिस्ट है, मेरी जो एल्बो है, सो आई कैन मूव लाइक दिस. सो ये दिस इज द थर्ड इंडिपेंडेंट मोशन. सो दिस इज थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. And now come to the wrist. Wrist में we have 3 motors. So ये motion independent, ये वाली motion independent. अगर मैं उसको ऐसे करके फिर दिखाऊं, ये independent motion and then ये independent motion. So this robotic arm which is in front of you has 6 degrees of freedom. So this has 6 degrees of freedom manipulator. ठीक है जी, ये वाली बात आपको समझ आई. अच्छा, अब एक जनरल रूल आप रख सकते हैं, जनरल रूल बना सकते हैं कि किसी भी एक मैनिपुलेटर में जितनी मोटर्स लगी हुई होंगी which can move independently,
So these are called, उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट कहलाता है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? अब आपने जो रीड करनी है जी असाइनमेंट, just let me just write it down here. So you need to reading assignment क्या है? ये आपने सबमिट नहीं करनी। Do we need more than 6 degrees of freedom? This is first question which you must seek answer to this. Then read about snake robot. और इसमें आपने क्या करना है? How many degrees of freedom एक स्नेक रोबोट में होती हैं? एंड इफ इट इज मोर, इफ दोज आर मोर देन 6, सो उन ज्यादा का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या? देन लुक फॉर अ टर्म रिडंडेंसी। redundancy. Let me just write it down again. Redundancy. This is redundancy. Okay. So ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है जी। प्लीज रीड थ्रू योर, गूगल करें इसको एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। कोई मुश्किल आंसर नहीं है। दिस विल जस्ट ओपन अप योर माइंड कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती है। ऑलराइट जी, वी मूव फॉरवर्ड एंड वी टॉक अबाउट नाउ टाइमलाइंस, जो कि अभी तक हम पहुंचे थे 1978 पे। देन 1982 में फनूक ने जो है जनरल मोटर्स के साथ हैड अ जॉइंट वेंचर एंड दे स्टार्टेड मेकिंग रोबोट्स फॉर नॉर्थ अमेरिका। सो ये फनूक भी आपने देखेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी जापान के साथ, एंड जनरल मोटर भी नो। सो इन दोनों ने मिलकर अपनी काम शुरू कर दिए। देन द सर्जिकल रोबोट्स, दे सिस्टम दे वर इन्वेंटेड बाय इंट्यूटिव सर्जिकल। ये भी एक कंपनी थी, इंट्यूटिव सर्जिकल नाम की एक कंपनी, जिन्होंने सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम्स के ऊपर काम शुरू किया। 1997 में यू रिमेंबर दैट नासा ने अपना जो पाथ फाइंडर मिशन था वो उन्होंने भेजा था, जो कि मार्स पे लैंड किया, और उसने वहाँ से जो है वो कुछ इमेजेस जो है उसने वहाँ से वापस भेजे थे। ये पहला मिशन था। और अभी तो रिसेंटली आपने देखा है कि अभी जो मार्स पे लैंड किया उन्होंने, अब वो वहाँ से न सिर्फ इमेजेस, वीडियोस, सैंपल्स और पता नहीं वहाँ से क्या क्या चीज़ें भेजी। तो ये 1997 की बात है। देन पीपल स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स विच वाज इन ईयर 2000, जिसके अंदर होंडा ने सबसे पहले एसिमो नाम का जो है रोबोट वो बनाया। इसकी मैंने आपको वीडियो भी, अभी वो जो इनिशियली मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें एक आपको रोबोट भागता हुआ नजर आ रहा था, सो दैट वाज एक्चुअली असीमो। सो असीमो जो है वो बनाया होंडा वालों ने, एंड देन सोनी वालों ने दे आल्सो मेड वन ह्यूमनॉइड रोबोट। लेकिन ये सोनी का जो रोबोट है, अभी रिसेंट तो नहीं, कुछ अर्सा पहले सोनी ने एक आइबो के नाम से, AIBO, आइबो रोबोट बनाया है, विच इज अ पेट डॉग एक्चुअली। सो ये पेट डॉग है विच इज अ रोबोट आइबो के नाम से। यू कैन गूगल इट ऑन फॉर दिस ऑल्सो। सो प्लीज, नॉट एन असाइनमेंट, बस जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड आउट कि ये आइबो जो है ये क्या है और कैसे। बहुत उसके अंदर भी लॉट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और बहुत चीज़ें उसके अंदर है। सो वो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि रोबोटिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स जो है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। एंड नाउ कमिंग ओवर टू द लॉज ऑफ रोबोटिक्स, जो सबसे पहले आइजैक ने जो आइजैक एसिमोव ने डिफाइन किए थे। सो सबसे पहला लॉ क्या था? सबसे पहला लॉ ये बनाया गया, अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग or through an action allow a human being to come to harm। ठीक है? सो कोई भी ह्यूमन बीइंग को इंजर भी ना करे या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हार्म ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोटिक्स। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है? अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स
must obey orders given to him by human beings, except where such orders would conflict with the first law. So it means that if I order a robot to injure somebody else who's a human being, so the robot should not obey my orders. So ये second law आ गया. And then एक third law जो है which also came into being, and that was a robot must protect its own existence. As such, protection does not conflict with the first and second law. So अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखना है. So a robot should not harm somebody to protect its existence. ये वो वाली चीज है जो हम बात कर रहे थे शुरू में ना कि जी रोबोट कैन टेक ओवर द ह्यूमन बीइंग्स. तो विद दिस लॉ कि जी रोबोट जो है वो इंजर नहीं करेगा अपने आप को. तो ये क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, तो वो एक्चुअली इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा अपने आप को. ये जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ये जो प्रोटेक्ट इट्स ओन सेल्फ के बारे में. सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स जो कि हैंडबुक में गिवन है, जो कि आइजैक एसिमोव ने दिए थे. इसके ऊपर देन लोगों ने कुछ और बातचीत शुरू की, एंड दे केम विद अनदर डेफिनेशन व्हिच इज कॉल्ड अ जीरोथ लॉ. ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है कि अ रोबोट मे नॉट इंजर ह्यूमैनिटी. यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग को चेंज किया विद द वर्ड ह्यूमैनिटी, एंड थ्रू एन एक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म. सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ह्यूमन बीइंग की बजाय लेट अस ब्रॉडन द टर्म एंड वी टॉक एंड वी से दैट इट्स ह्यूमैनिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाटएवर थिंग्स बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमन should not be injured or harmed by the robot. So ये एक zeroth law के तौर पे this also came into existence. अच्छा, now ये कोई these are not so such kind of laws कि these have to be followed for any manufacturing company, but these are something which we think are the क्या कहना चाहिए कि ये norms हैं. These are the norms of making a robot. तो ये this has to be taken care of while you are making a design of a robot or manufacturing a robot. जी, यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? ओके सर, ये so यानी कि लॉस तो कोई बंदा अगर ना यानी कि इनको अप्लाई करे तो मॉनिटर कौन करता है लॉस? जी देखिए, ये जो हैंडबुक ऑफ रोबोटिक्स है इसके अंदर ये लॉज दिए हुए हैं, एंड दे थिंक एंड दे कंसिडर कि जो भी इंसान रोबोट्स के साथ डील कर रहा है वो इन लॉज को अबाइड बाय करेगा, क्योंकि एज सच इसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इसको अभी देख रही है. बट ये है कि जो भी इसके ऊपर काम कर रहा है वो खुद इस चीज को अबाइड बाय करेगा कि यार मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बनानी जो कि इन लॉज के बाहर काम करे. ठीक है जी. So this is all for today. We will talk about evolution of robotics in the next lecture, जो कि हमारा कल होगा 1 hour का. तो उसमें हम evolution of robotics के बारे में बात करेंगे. So until now जी, is there any question आज के पूरे lecture के अंदर? It was again a generalized lecture just to give you an idea of robotics and just to bring you into a frame of reference where you can start thinking of robots. You can start applying those robotic motions onto yourself. बैठें, सोचें, जैसे मैंने आपको कहा अपने हाथ को, बाजू को मूव करें, सोचें कि यार ये कौन सी मूवमेंट है, ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है. And one more thing, you can just see that how many degree of freedoms your arm has. ये आप सोचें इसके ऊपर, पहले खुद सोचें, सीधा जंप नहीं करना गूगल पे, सोचें. सर 9 होंगे. जी सॉरी सर 9 होंगे आई थिंक. कोशिश कीजिए और सोचें कि कितने होने चाहिए.
अपने आप को मूव करें, देखें, एंड देन गूगल इट, एंड गूगल विल टेल यू कि आपके बाजू के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है सर उंगलियां भी मिलानी है साथ में? अब ये अब आपकी वो है, मैंने आप पे छोड़ दी ये चीज, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि कंसिडर, हो सकता है कोई कहे कि यार मेरे बाजू में तो 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर कोई कहे नहीं यार 9 है, जैसे आपने कहा 9 है, मैं कहता हूँ 6 है, कोई कहता है 4 है। तो अपने आप को करें, फिर देन गूगल करें और देखें रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि आपके और वो कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। ठीक है जी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो I'll wait for 30 seconds and we'll take question, and if there is no question then we will call off the day. सर जी अगर इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर इस कोर्स में यानी ज़्यादा क्या होगा, थ्योरी होगी या फिर यानी किस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें? न्यूमेरिकल वगैरह तो मुझे लग रहा है। देखिए अभी हम थोड़ा सा जैसे ही आगे चलेंगे ना, आपको एग्जैक्टली समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैं एग्जाम में आपसे क्या पूछूंगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा चलने बाकी दें ज़्यादा कोर्स। थ्योरेटिकल टाइप का कोर्स होगा? ये ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप का होगा सर जी, कोर्स? डेफिनेटली थ्योरेटिकल, क्योंकि इसमें देखिए लैब पार्ट तो है ही नहीं इसका। लेकिन मैंने जो आपसे बात की थी ना, मैं आपको थोड़ा सा लैब करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक वो फ्लेवर दे दूं कि यार ये चीजें काम करते हुए दिखती कैसे हैं। एक्चुअली वीडियोस में भी आपको नजर आ सकती हैं और ऑन ग्राउंड में आपको दिखाना चाहूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप में से कुछ लोग थोड़े से अपने हाथ का फील भी लें कि यार ये चीजें कैसे काम करती हैं। ओके सर जी, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay ji, if there is no more questions, so I'll just now switch off the recording.